Hi guys, my name is Soham. I hope you are doing well. So today we'll cover with our chapter one of science, that is the exploration entering the world of secondary science. Basically, this is not a very conceptual chapter. This is just to introduce you to the secondary level of science. So far till 8th standard, you have learned थोड़ा primary level of science, but from now on you will थोड़ा तुम्हारा साइंस का लेवल भी अपग्रेड कर दिया होगा एंड यू विल लर्न अबाउट ऑल ऑफ these things. First suggestion that I'll give would be read your NCERT thoroughly, because that is the best thing you can do. NCERT के बाहर कुछ आता नहीं है, and NCERT has covered all the things in a very friendly manner and in a very good language. So it is not very difficult to understand as well. तुम दो बार पढ़ोगे चैप्टर, ध्यान से पढ़ोगे, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, मन में पढ़ो, जोर से पढ़ो. But if you read it twice or thrice, you will get through the chapter, and तुमको ऐसा बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. Uh, you will be thorough with all the concepts. Okay. So far, what do so this is a very basic chapter. यहाँ पे ज़्यादा कुछ technicalities नहीं है. This is just to introduce you to the new books of class ninth also, and also the what all things we are going to learn about science, because science is everything. Like everything is comes under science. That is, there is nothing, no thing we have in the world that does not have science behind it. Okay. So far you have learned with very basic ideas of science till 8th standard. From now on, we'll be learning with the secondary stage textbook of science, that is exploration. अब अच्छा हाँ, तुम्हारी books भी अभी change कर दी गई है. So that is this chapter is to make you friendly. Okay. So what is science? Sometimes you may ask कि science है क्या, कि क्या चल रहा है साइंस में. ऑल्सो फ्रॉम नाउ ऑन थोड़ा तुम्हारा साइंस में स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. मे बी इट इज नॉट द राइट टाइम टू तुमको एग्जैक्टली बताना क्या फिजिक्स है, क्या बायोलॉजी है, क्या केमिस्ट्री है. तुमको यू मे नो दैट कि क्या 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 है, बट ठीक है, इट्स ओके. हियर a beautiful example is given: a cricket shot. Think of a cricket ball being hit for a six. You want to make a simple model. What details would you include? What would you ignore? अभी यहाँ पे तुम क्या चीजें इंक्लूड करोगे? फर्स्ट थिंग, विल नॉट कंसिडर कि व्हाट इज द ब्रांड ऑफ द बैट, व्हाट व्हाट इज द ब्रांड ऑफ द बॉल. ठीक है, ये ये सब चीजें तो नहीं होती ना. विल नॉट इंक्लूड, विल नॉट कंसिडर कि अच्छा ग्रास है कि नहीं, मिट्टी है कि नहीं. ग्रास है तो कैसी ग्रास है, ग्रास पे ड्यू है कि नहीं. दैट इज अ वेरी सेकेंडरी थिंग. ड्यू, ग्रास पे ड्यू होना वगैरह, दैट इम्पैक्ट्स द फील्डिंग. ओके. एंड द बॉलिंग. बट व्हेन अ बॉल इज हिट, when a ball is hit, I'm repeating, when a ball is hit, what factors do we need to consider? First, we need to consider the mass of the ball, that is the weight of the ball in simple terms. Then we need to consider the velocity. In simple terms, we need to consider the speed of the ball. कितना जोर से बॉल, कितना दूर से बॉल आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द बॉल ऑल्सो. फिर कितने जोर से बैट घुमाया है. ठीक है, वो भी मैटर करता है कि कितने जोर से बैट घुमाया है एंड किस किस डायरेक्शन में घुमाया है. ऐसा नहीं है ना कि मैं बैट सिर्फ सीधा घुमा रहा हूँ, बॉल पीछे जा रहा है, वो तो तुक्का हो गया. ठीक है. सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, that we need to consider to learn science, and this is how all the things work in the universe as well. Also, as okay, so far I think this is very clear. You read till this point, and then you may continue with the video. Okay. Okay, so now, as you will, as the level of science is upgraded, so now we'll be using very specific terms and specific measurings, meaning, symbols to learn all the terms and concepts that we use in science. So, for example, like I said here, कि कितना जोर से बैट घुमाया है. जोर से बैट घुमाया मतलब क्या? फोर्स लगाया ना. मैंने तुमको धक्का दिया, तो मैंने तुम पे क्या लगाया? फोर्स लगाया है. So that is, we need to consider force. Then we have mass. So
just I said, the weight of the ball, mass. Then we have the direction. Then we have the speed by which the ball is coming towards the batsman, and the batsman has hit the ball with a certain speed. So that is again velocity. So for that, science uses a universal shared language of units to maintain uniformity. We have similar units also and symbols also. So just you can see here that we have M, V, F, and I. So basically, small m represents the mass. Then the small v represents the velocity. Capital F represents force. Capital I represents current. So these symbols are used to make the terms short also, and also to define mathematical relationships between these quantities clearly. We cannot every time we cannot write na ki mass into velocity is equal to force, mass into acceleration is equal to force. This is not for ninth level, but I'm just giving an example. So that is why we use symbols like m, small v, capital F, capital I, then capital V. Capital V is denoted for voltage. These are all terms you will gradually learn as you move towards 10th standard. Okay? So yeah, this is how the symbols are used. Okay. अभी तुमको लग रहा होगा कि साइंस है सो नो मैथ्स नो दिस इज नॉट द केस मैथ्स विदाउट साइंस इज नथिंग बिकॉज जो कुछ थियरी है थियोरेटिकली तो मैं कुछ भी बोल दूं बट डज दैट थिंग एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट करती है तो किस वे में एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए वी नीड मैथ्स एंड वी नीड मैथमेटिकल इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस के बिना मैं कोई चीज प्रूव भी नहीं कर सकूंगा एंड प्रूव भी कर दी मैंने थियोरेटिकली आई कैनॉट कैलकुलेट आई कैनॉट यूज दैट थिंग मैं डेफिनेशन कितनी ही बार बोलूंगा आई विल से कि हाँ मास इनटू मतलब मैं बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा है डेफिनेशन है एंड ऐसा सब वो लॉ है बट हाउ विल आई यूज दैट डेफिनेशन मुझे डेफिनेशन तो प्रैक्टिकल नॉलेज में मतलब प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकलिटी द डेफिनेशन विल बी ऑफ नो यूज आई नीड टू आई नीड मैथमेटिकल इक्वेशंस टू यूज दैट डेफिनेशन ठीक है यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिया गया है एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन का दैट दैट वाज दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनिट्स तुमको पता है ना कि वी हैव सर्टेन यूनिट्स जैसे फोर्स का होता है न्यूटन देन वी हैव वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जैसे जैसे वेट्स होते हैं अभी इन इंडिया वी यूज केजीज टू रिप्रेजेंट बट इन इन आउट ऑफ इंडिया people use pounds. Okay, so this may cause a misunderstanding, and that has led to this case. I suggest you to read this because here basically what happened was the fuel needed by an airplane was calculated in kg, but it was filled in pounds rather than kilograms. And the density difference made the airplane short of fuel, and it was like the airplane was midway and the fuel was finished and then but there were no casualties because the plane could just glide and do an emergency landing because of the aerodynamics of the airplane and the structure it can glide over miles also but yeah also we have kilometer we have miles so that makes difference because if this is just for general knowledge 1 kilometer is equal to sorry one mile is equal to 1.6 kilometer सो तुम समझ रहे हो 600 meters का फर्क है दोनों में एंड इट दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस वेरी लार्ज डिफरेंस फॉर स्पेसिफिकली इन साइंस बिकॉज साइंस में यू नीड precise calculations precise readings and everything ठीक है next up we have what do we mean by law okay so a law describes a regular pattern observed in nature, often expressed using words or mathematical relationships. Clear है? I'll explain it in a very. I'll try to explain it in a easy language. ठीक है? मतलब law is something that we regularly observe in nature कि अच्छा ये बार बार होता है हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि ओ
ओह दिस हैपेंस एवरी टाइम दिस हैपेंस एंड अपने को पता चलता है कि हाँ ये ही चीज बार बार हो रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, when when the bus stops suddenly we feel a jerk, right? और ऑल्सो वाइस वर्सा, व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली, अचानक से जब एक्सेलरेट करता है तभी अपने को जर्क मिलता है। सो दैट इज व्हाट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन। यू विल learn about these laws in further chapters, but for now you just understand what does a law mean, कि ये पैटर्न रेगुलरली फॉलो किया है। यू मे हैव नोटिस दैट व्हेन यू टेक अ वेरी शार्प left turn in at a very high speed, your body goes towards the right because of Newton's laws of motion. That is that the first law of Newton explain this only. कि every body tends to be in rest unless an external force is applied. That is of no use for now for you, but this is what a law states, and that is a law. ठीक है. Now we'll say what is a theory then. बेसिकली थ्योरी गोज अ स्टेप फर्दर। थ्योरी का काम है कि जो हमने लॉ दिया है उसको एक्सप्लेन करो, कि हाँ अच्छा तुमने लॉ दिया था, अच्छा बताओ ये लॉ है क्या, ये बताता क्या है। लॉ इज अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट कि ओके ऐसा है। थ्योरी गोज फर्दर एंड एक्सप्लेन भी करते हैं, अच्छा ये होता है तो क्यों होता है। जैसे यहाँ पे था न्यूटन्स लॉ, वी वी कुड अंडरस्टैंड कि ओ बस रुकी, जर्क लगा। अच्छा, ये तो हमने ऑब्जर्व किया, लॉ बना दिया कि ठीक है बस रुकती है तो जर्क लगता है। बट थियरी क्या बताता है? थियरी बताता है कि अच्छा बस रुक रही है तो जर्क लग क्यों रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ कि तुम्हारी बॉडी रेस्ट में है एंड जब तक अलग से फोर्स अप्लाई हो नहीं रहा तो तुमको लग रहा है। तो दैट इज अनदर थिंग दैट इज विल नॉट गो इन दैट डिटेल, बट दिस इज व्हाई वी यूज थियरी। जैसे हियर वी हैव गिवन एन एग्जांपल दैट द एटॉमिक थियरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अपने को पता है मॉलिक्यूल्स है, दुनिया में मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म भी होते हैं, टूटते भी है, बनते भी है। ठीक है, ये तो लॉ हो गया। बट वो बन क्यों रहा है? आई मीन क्यों हो रहा है ऐसा? तो वो बताता है थियरी कि अच्छा अगर ये सर्टेन चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। A theory goes a step further and provides an explanation of why those patterns occur, usually based on evidence gathered over time and available at that time. बेसिकली साइंटिस्ट रिसर्चर्स देखते हैं पैटर्न्स, नोटिस करते हैं कि ओ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर क्या 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 फैक्टर्स उसमें लग रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वी गेट अ थियरी। ठीक है, प्रिंसिपल्स। ओके, सो व्हाट आर प्रिंसिपल्स नाउ? So here we are given with the definition that principles are broad ideas that helps us make sense in a given situation. जैसे मान लो वी हैव अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी being applied when climbing up the stairs. So this is our principle. So this is how this is what the principle is. Principles are broad ideas that help us make sense in a given situation. कि अच्छा हम स्टेयर्स चल रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, वो होगा ही कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, तो ये प्रिंसिपल है तुम्हारा। ओके, then what do we have? Prediction. Science is totally based on prediction. If you know the story of Newton, he was sitting under he was sitting under an apple tree, and an apple fell on his head, and then he just thought, "Ki, oh, there is something that pulls the apple towards the ground. What is it?" Then we discovered gravity, gravitation. This is so science is based on predictions. We predict, we research on it, we we state laws, then we prove the laws through theories, and we establish models, etc., things. And this is totally dependent on predictions. So predictions is basically something कि you predict कर रहे हो, तुम मान रहे हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हम मान लिया, चलो हो रहा है। अभी साइंस का क्या काम है कि वो हो रहा है ना, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा उसका क्या यूज है, क्या उसका ड्रॉबैक है, ये सब होता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स वी से कि चलो हमने एक फुटबॉल को लात मारा, ठीक है, किक वी किक्ड अ फुटबॉल, ठीक है, अभी ये कितना दूर तक ट्रैवल करेगा, ठीक है, कितना दूर तक ट्रैवल करेगा, तो अपन मान सकते हैं ना। तो हमने माना कि कितना वी कैन प्रेडिक्ट कि अच्छा ओके ये
इतना दूर तक जा रहा है, ये इतना दूर तक नहीं जाएगा, फिर ये गोल पोस्ट में जाएगा कि नहीं, गोलकीपर गोल पकड़ेगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स। थोड़ा केमिकल रिएक्शन का नॉलेज है तो अपन वी कैन एस्टिमेट कि अगर हमने इतना कूड़ा जलाया, सपोज वी हैव बर्न सम गार्बेज, सो दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, or else if we are baking something, so this much amount of time we'll need to bake this much amount of product. And in case of biology, we can predict ki how are we breathing while running, because when we run we need more oxygen because our muscles need more oxygen. So we can just predict कि अच्छा इतना ऑक्सीजन लग सकता है, अगर इतना भाग रहे हैं, स्लो भागेंगे तो कम लगेगा, ज्यादा भागे तो ज्यादा लगेगा. So these are all predictions लगते हैं, but one thing to remember that these predictions are not just merely guesses. They are actually reasoned expectations based on evidence and careful thinking. ये ऐसे रैंडम मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ओ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट नो नो, दैट इज नॉट द केस. They have reasons behind it, and over the time, noticing the things, noticing patterns, we come to know about all of these things. Okay, so you just go through all of these things, all of these pages. A very very small chapter it is. Okay, so we'll just quickly summarize what we have learned so far. We have just learned कि now we are stepping into this world of secondary science. अभी now we'll go in more detailed manner. We'll learn things in more detailed manner. We'll explore things, how things work, why this happens, why that happens, how does this happen, etc., etc. Things. We saw an example of cricket shot. Then we saw the example of uniformity. Ki why do we need uniformity in the SI units? Why do we need uniformity in the why we need uh, symbols? Why we need exact symbols? How a symbol represents a factor, etc., etc. Things. Then we saw four basic things. That is a law. That law is basically a regular pattern that is observed in nature. Then we saw theory. Theory is something that explains the laws, that why those patterns occur, and that is actually based on the evidence gathered over time and present at the time when those patterns were noticed. Then we saw when we saw principles, that our principles are broad ideas that help us make sense in a given situation, etc. Then we saw predictions, that predictions are very useful. Predictions are actually the base of science, because that is the ability. Science is Strength of science is something that is the ability to make predictions. All of the things are based on predictions. Then we prove it. Then we have laws. We have evidences, and just to just keep in the mind that predictions are not merely guesses. Those are patterns noticed over time. Those have got research behind it, and all of the things. So yeah, this is a very small, chotu sa cute sa chapter. I suggest you to read it twice. Okay. Also, you may have learned this chapter in the school. This is not a very big chapter. So yeah, this is by this we are done with our chapter one of science, that is exploration entering the world of secondary science. I hope you have got all the concepts, you have understood all the concepts. If you have any doubts, please put it in the comment sections. I will definitely try to clarify them. Also, please put some feedback on the teaching, on whatever you may want. I'll definitely try to incorporate those things and improve myself. So yeah, yeah, then thank you so much for watching this video. Please read this chapter twice. Thank you so much for watching this video. Thank you. Take care. Bye bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.